All right. So in the last class, we were talking about factors of the rate of enzyme reactions, and then we talked about the factors affecting the rate of enzyme reactions. Let's just go over them very quickly. The very first factor that affects the enzyme reactions is the concentration of the substrates. Now, the more the concentration of the substrate that we're going to have, the more the collisions between the enzyme and the substrate will take place, due to which there will be more products formed, right? This was going to increase the rate of reaction until when? Until the all the active sites are going to become occupied, right? At that point, we'll say that the enzyme concentration has become the limiting factor, because if अभी we had उठाया है ना। more enzymes, we could have had a higher rate of reaction. ठीक है? अच्छा जी. Then we had टेम्परेचर. ठीक है. टेम्परेचर के अंदर हम लोगों ने क्या बात करी थी कि if we increase the temperature, the rate of reaction is also going to increase. Why is it going to increase? It's because there will be more kinetic energy, right? There's going to be more kinetic energy, and there will be again more collisions between the substrates and the what we call as the active side of the enzymes. रणवीर टैग तो मैंने इंग्लिश की क्लास थी ठीक इधर है. तो So that's going to be the case. Now, the अच्छा, ये कब तक होगा? जब तक हमारे पास enzymes denature नहीं हो जाएंगे. ठीक है. This is going to happen until the enzymes denature. What do we mean by denaturation of an enzyme or of any protein? Whenever any protein is denatured, whenever any protein rather undergoes denaturation, what happens is that it loses its structure. It loses its structure. ठीक है. Now, why does it lose its structure, or whenever the protein is going to lose its structure, like egg? ठीक है. देखो, अगर हम लोग सिर्फ eggs की बात नहीं कर रहे, अगर हम लोग normally बात कर रहे हैं, people when they get burned, especially on their skin, तो उनके स्किन के ऊपर ना wrinkles अजीब से, मतलब that skin is not like skin anymore. ठीक है. तो what happens is, वो हम उर्दू में कहते हैं वो मुरझा जाती है. लेकिन वो भी तो प्रोटीन है ना. All right. So that's the case. अच्छा. Similarly, as you said, very good. कि देखो, अगर मेरे पास एक एक्टिव साइट ऐसी है, अब when the enzyme becomes denatured, अब उसकी एक्टिव साइट ऐसी हो गई, ये पूरा एंजाइम ऐसा हो गया, there will be no active site that will be allowing the substrate to join, let's say, attach onto the substrate or attach onto the enzymes, right? So there's going to be no active site that will allow the substrate to join up with the enzyme. Hence, हमारे पास क्या होगा भाई? हमारे पास the enzymes are not going to work. अच्छा, the temperature at which the enzyme works the best are called as optimum temperature. Usually mammalian enzymes के लिए 40 is the optimum temperature, right? वरना हमारे पास 37 हो सकता है. ठीक है, that's fine. uh, वरना हमारे पास in bacteria it can go up to as much as 18, certain bacteria, not all of them. ठीक है. एक चीज तो हमारे पास ये आ गई. Now, up once we know this, let's move ahead with the third factor affecting the rate of enzyme reaction. The third factor affecting the rate of enzyme reaction is the pH. Very good. ठीक है. अच्छा, before we talk about कि भाई how is the pH affecting the rate of enzyme reaction, पहले मुझे ये बताओ, ये pH होता क्या है भाई? What is the pH? pH is a scale. pH हमारे पास क्या है? पोटेंशियल वो है. ठीक है. बोथ ऑफ यू आर करेक्ट. लेकिन ये एक्चुअल में क्या है? हम कहते हैं भाई pH is the scale used to measure what? No, 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 no.
तो देखा, यू वर राइट बिफोर। हमने कहा इट्स अ स्केल यूज टू मेजर एसिडिटी एंड एल्कलिनिटी। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड दिशा। ऑलराइट। अच्छा, तो पीएच हमारे पास क्या है? इट्स बेसिकली अ स्केल दैट्स अलाउइंग मी टू मेजर समथिंग, मेजर व्हाट अमाउंट ऑफ एसिडिटी एंड एल्कलिनिटी। नाउ अब अगर हम लोग देखें, लेट्स अंडरस्टैंड द पीएच फर्स्ट, विल गो टू द ग्राफ लेटर। हमारे पास जो पीएच स्केल होता है ना, फॉर आर ईज वी गोइंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम 1। ठीक है, वेरी गुड आइजर। अच्छा, अब अगर हम बात करें, मेरे पास पीएच 1 है, 2 है, 3, देन 4, 5, 6, गोइंग टूवर्ड्स व्हाट, राइट इन द मिडल, 7। 7 से ऊपर ही कहाँ तक जाता है? टूवर्ड्स 14, 9, 10, 11, 12, 13. Let's just extend it a bit and add a 14 right here as well. अच्छा, अब देखो होता क्या है। If you go below 7 to 1, you'll experience an increase in acidity. If you go beyond 7 all the way towards 14, you'll experience an increase in the alkalinity. Now, my question is, what is acidity? What is alkalinity? Base and alkaline are pretty much the same thing. Okay? Alkalis are soluble bases. On the pH scale, they're pretty much the same better. Here, the question right that I have is, what is acidity? What is alkalinity? बड़े आसान अल्फाजों में समझा दो कि सर ये एसिडिटी होती है, अल्कलिनिटी होती है। हाँ भाई, एनीवन? एसिडिटी is something how acidic like lemon। ठीक है, नहीं वो तो देखो, आपने जो टेलिंग मी एसिड, राइट? मैं कह रहा हूँ एसिडिटी क्या होती है, व्हाट इज एसिडिटी? हाउ मच एन एसिड, नॉट सर। ओके, वेरी गुड आइजर, वेरी गुड, वेरी गुड। अब इसको देखो बेटे, हमारे पास एसिडिटी और एल्कलिनिटी जो पूरा गेम है ना, ये सिर्फ दो हॉर्मोन्स का, सॉरी नॉट हॉर्मोन्स, अफुल्ला, दो आयंस का। एसिडिटी is the measurement of the concentration of कौन से वाले ions? हाइड्रोजन ions। ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ऑलराइट। alkalinity is a measure of hydroxide ions। ठीक है, compare to each other, compare to each other। An acid has more amount of hydrogen ions compared to hydroxide, and alkali has more amount of hydroxide ions compared to hydrogen ions। ठीक है, आप इसको देखो बेटे, ये भी स्केल मुझे क्या बता रहा है। अब मैंने कहा, देर आर गोइंग टू बी दे एट pH 5, देर आर गोइंग टू बी more hydrogen ion than pH 6, but less hydrogen ions than pH 4, right? pH 1 contains the highest amount of hydrogen ions। तो हम लोग यहाँ ना उल्टा चल रहे हैं। हम कहते हैं कि भाई अगर 7 से नीचे की तरफ जाएंगे ना, तो एसिडिटी बढ़ेगी, मतलब हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी। pH 3 will have a higher concentration of hydrogen ions in pH 6, 5, and 4, but will have a lower concentration of hydrogen ions in pH 2 or 1. pH 6 has the least amount of hydrogen ions. pH 1 has the highest amount of hydrogen ions. Alkalis में उल्टा है। In al if I'm saying कि भाई, if I would talk about alkalis, तो मैं कहूँगा कि भाई pH 8 contains less amount of hydroxide ions compared to pH 12. pH 12 contains more amount of hydrogen ions than 8, 9, 10, 11, but less amount of hydroxide ions compared to pH 13 and 14. वो हमारे काम नहीं है बच्चे। इकरा दैट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। वो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अच्छा जी, आर वी क्लियर टिल हियर?
ओके, आई एम टेलिंग यू दिस, आई एम टेलिंग यू, डोंट वरी। अब मुझे एक बात ये बताओ, इससे बेचारी परेशान हो गई कि सर केमिस्ट्री क्यों पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री तो कल पढ़नी थी हमें। खैर खैर, अब मुझे एक छोटी सी बात बता दो सो दैट वी कैन गो बैक टू द टॉपिक। नहीं नहीं, solids can also be pH, or solids can also have different pHs। ठीक है, कॉस्टिक सोडा जो होता है हमारे पास सॉलिड ही होता है इनिशियली। खैर वो एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है। गैसेस सब दे भी आल्सो हैव एसिडिक गैसेस एज वेल। खैर खैर, वो एक अलग चीज है। द थिंग इज भाई, ये pH 7 पे क्या कहानी है? व्हाई इज pH 7 कंसिडर्ड टू बी न्यूट्रल? हाँ, तो न्यूट्रल क्यों होता है? व्हाई डू वी कॉल इट न्यूट्रल? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड न्यूट्रल? क्यों? व्हाई आमना, व्हाई इज इट नाइदर एसिडिक और अल्कलाइन? क्योंकि इसके पास ना तो हाइड्रोजन आयन होता है ना हाइड्रोक्साइड आयन होता है, देखो। ओके, तो तय है। अब कैसे बना, कैसे बना? अब इसको देखो, इसको देखो, होता क्या, होता क्या। व्हाट हैपेंस इज सैयद, हमारे पास whenever the concentration of hydrogen ions and hydroxide ions, they become equal, they become equal, they will react together, forming what? Water. अब when both of them are going to react together to form water, ना रहेगा हाइड्रोजन आयन, ना रहेगा हाइड्रोक्साइड आयन। जब हाइड्रोजन आयन नहीं है तो एसिडिटी नहीं होगी, जब हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है तो एल्कलिनिटी नहीं होगी। इतनी आसान सी बात है भाई। डू वी अंडरस्टैंड दिस? ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? ऑल राइट। हाँ, अब हसनैन क्या होगा? लेमन के अंदर हाइड्रोजन आयन ज्यादा है, तब अगर मैं यहाँ दो हाइड्रोजन आयन रख दूं तो भाई मेरे पास अभी भी एक हाइड्रोजन आयन बचेगा ना, दो में से। वन हाइड्रोक्साइड रिएक्शन, वन हाइड्रोजन आयंस। लेकिन अगर मेरे पास दो हाइड्रोजन आयंस है तो उन दो में से एक ही रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो खैर, यू नीड टू आस्क सर हमजा फॉर इट। खैर खैर खैर, अच्छा जी, ठीक है। अब नाउ दैट वी नो दिस, अब हम लोग इसी चीज को ना इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शंस एट डिफरेंट pHs। Now, why is this so important? It's because there are three locations in my body that contain three different pHs. For example, if I'm going to talk about my mouth is neutral। ठीक है, सलाइवा, माउथ के अंदर एक फ्लूइड है सलाइवा, वो न्यूट्रल है। ठीक है, फिर इफ यू गो डाउन इनटू द स्टमक, भाई वो एसिडिक है। इफ यू गो फर्दर डाउन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन्स, वो अल्कलाइन है। Now, why are we talking about these three locations of the body? Is because in these three locations there are three different enzymes acting। ठीक है, अब let's talk about the mouth। माउथ के अंदर हमारे पास एंजाइम है कॉल्ड एज एमिलेस। जब मैंने एमिलेस को अलग इन सारे 1 से लेके 14 pH तक उसको रिएक्ट करवाया और फिर मैंने ग्राफ बनाया, तो मेरा ग्राफ जो था वो कुछ यूं बना, राइट? सो दिस इज अ ग्राफ फॉर व्हाट? फॉर द एंजाइम एमिलेस। नाउ व्हाट कैन आई अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस ग्राफ? ठीक है, वी अंडरस्टैंड that amylase is working on a wide range of pH। अब देखो, amylase pH 4 पे भी काम कर रहा है, pH 5 पे भी काम कर रहा है, pH 6 पे भी काम कर रहा है, pH 8 पे भी काम कर रहा है, pH 9 पे भी काम कर रहा है, लेकिन इट्स एक्टिंग द बेस्ट एट pH 7। तो मैंने कहा कि एमिलेस का जो ऑप्टिमम pH है, द pH एट विच इट वर्क्स बेस्ट इज न्यूट्रल। अगर हम लोग नंबर्स नहीं देखें तो अगर हम लोग सिंपल कहें तो हम लोग कहते हैं न्यूट्रल ऑप्टिमम pH है। हाँ, अगर ज्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट हो गया, ज्यादा एल्कलाइन एनवायरनमेंट हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन जीरो हो जाएगा। हेंस द एंजाइम इज गोइंग टू डीनेचर, राइट? या फिर
the since enzyme denatures at different pHs, right? It becomes denatured. Very good. All right. अच्छा जी. Now, लेकिन when I did the very same experiment with another, with another, uh, let's say enzyme, ठीक है? An enzyme found in the stomach called as pepsin. उसका ग्राफ मेरे पास कुछ यूं बना. There's an enzyme found in the stomach called as pepsin. पेप्सिन के ग्राफ से मुझे क्या पता लगा कि भाई पेप्सिन हमारे पास जो है, इट्स वर्किंग द बेस्ट इन व्हाट, इन एल्कलाइन पीएचएस, सॉरी इन एसिड, आई एम सॉरी, इन एसिडिक पीएचएस. ठीक है. अच्छा. हाँ, पेप्सिन. एक मिनट रुकिएगा प्लीज. लेट मी जस्ट स्ट्रेटन दिस ग्राफ आउट. राइट. कैन पेप्सिन वर्क एट pH 4? Yes it can. Can it work at pH 6? Yes it can. pH 7 के ऊपर जाके अकॉर्डिंग टू आर ग्राफ वो क्या हो रहा है, डीनेचर हो रहा है. इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि पेप्सिन दूसरी जगह पे काम नहीं करेगा, लेकिन उसका जो ऑप्टिमम पीएच है हमारे पास अकॉर्डिंग टू आवर ग्राफ इज कमिंग आउट टू बी 2. देन वी हैव अनदर एंजाइम दैट्स फाउंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, लाइपेज. लाइपेज का ग्राफ कुछ यूं बना. So the lipase optimum pH for lipase is coming out to be 13. This tells me that lipase works best at alkaline pHs. So all in all हमें क्या पता लगा कि different enzymes require different pH to act. ठीक है. Different enzymes require different pH to act on. The pH at which the enzyme works the best is called as the optimum pH. Do we understand this, बच्चा लोग? यहाँ तक कोई मसला? Does anyone have any problems with this? All right. अब बस एक आखिरी चीज before we get done with this topic. There are a few enzymes that I would want you guys to write down, uh, because we'll be talking about them as we would go on. ठीक है. अच्छा जी. खैर. uh, what are those enzymes? So let's write them down. Okay. So, okay. Yes, we'll have to memorize all of this. I'm sorry, unfortunately. ठीक है. अच्छा खैर. अब इसको देखो. तो हम लोग बात करते हैं few important enzymes. ठीक है. अच्छा. सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द एंजाइम प्रोटीएज. ठीक है. चलो इसको यहाँ लिखते हैं. तो वी हैव अ ग्रुप ऑफ एंजाइम्स जो हम लोग अगले चैप्टर के अंदर सेग्रीगेट करेंगे. दे कॉल्ड एज प्रोटीएजेस. प्रोटीएज क्या करते हैं? प्रोटीएज break down or act on proteins, converting them into what? Amino acids. ठीक है. दिस इज फर्स्ट एंजाइम. फिर हमारे पास कुछ ग्रुप ऑफ एंजाइम्स हैं that work on lipids and fats. They are called as lipases. Lipases act on lipids, converting them into what? Fatty acids and glycerol. Yes, बच्चा. एंजाइम that acts on proteins. फिर हमारे पास एक एंजाइम है जो हम लोग काफी देर से पढ़ रहे हैं, which is what? Amylase. Which is what? Amylase. Amylase क्या करता है?
amylase breaks down starch into maltose। ठीक है। अच्छा जी, अब माल्टोस हमारे पास जो है, वी हैव थ्री डाइसैकेराइड्स, माल्टोस, सुक्रोज एंड lactose। Let me use a different color for it. So maltose is acted on by the enzyme maltase, converting it into glucose. Sucrose breaks down or is broken down by the enzyme sucrase, forming glucose and another sugar called as fructose. Lactose is broken down by the enzyme lactase into what? Glucose and another sugar called as galactose। ये अभी याद हो जाएंगी, फिक्र मत करिए। बस this is something that I would want you guys to take some time and copy this. Take 2 minutes for it and copy this. ठीक है? So we're done with this chapter.